नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव कैप्टन तुषार प्रधान एक कार्यक्रम में लखनऊ पहुंचे, जहां पर न्यूज टाइम्स के न्यूज एडिटर रोहित रमुआपुरी ने उनसे खास बातचीत की। शिपिंग इंडस्ट्री से संबंधित कई मुद्दों पर बेबाकी से बात हुई है। आप भी देखिए ये खास बातचीत। प्रतिभा है, हमारी जो टैलेंट है उसको लेके हम आगे जा रहे हैं। और जो रिटायरमेंट की जो बात हुई, तो अभी सर कहीं ना कहीं एक समस्या और आती है जॉब की लेके। इस पे भी जरा अगर सर कुछ बताएं कि उसको हम कैसे ग्रो करेंगे उस चीज़ को लेकर। नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। MUI मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी श्री तुषार प्रधान जी। मैरीटाइम सेक्टर के बारे में आप सबको पता होगा और ये कितना बड़ा इंडस्ट्री है, हर किसी को इसके बारे में जानकारी है। तो हर कोई एक संगठन होता है, वो संगठन के अंदर कुछ लोग काम करते हैं कि हमारी जो डिमांड होती है, हमारे साथ जो एक गार्जियन की भूमिका संगठन निभाता है, उसी गार्जियन की जो प्रमुख व्यक्ति हैं तुषार प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे कुछ बात करेंगे, कुछ जानेंगे इस सेक्टर को लेकर के, और संगठन ये किस तरह से काम करता है, जो चुनौतियाँ हैं वो किस तरह से हैं, वो कैसे आप लोग समझते हैं। क्योंकि हमारा जो ये चैनल है वो खासकर हिंदी में काम करता है। तो सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बातचीत करने के लिए हम लोग का बातचीत हो चुका है। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ टाइम्स में। सर, पहला सवाल हमारा ये है कि मैरीटाइम सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है, और ये जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसको ये कैसे मजबूत करता है, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। Namaskar and thank you for inviting me. It's my pleasure and I'm honored to be here. The maritime industry is growing leaps and bounds. Government of India has realized that we need to do a lot more for this maritime industry to grow. There is a lot of focus on the Indian seafarers. Presently, we are at 12% of the global supply chain. The intentions of our government, especially our Honorary Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, has decided that now India will scale much higher. We are targeting at 20% by 2030. The global seafarer community should be from India. We have a lot of talent. We are very knowledgeable. We are respected seafarers by every country, and in the maritime industry, we head the whole global industry. Government has given a lot of SOPs now. They are trying to recruit more and more trainees. Today, our industry has to have more numbers. Then only we can reach this target of 20% by 2030. In the earlier years, the retirement age was at 60. Gradually, more and more ships started coming in, and after COVID, everybody is knocking on India's doors. Today, the retirement age has gone beyond 65. But this cannot continue forever. So we need new recruits, young buddies to come in to replace the older generations. We need the older generations so that the transformation is done in a very smooth manner. The knowledge is shared. Government is arranging for sponsorships so that the maritime training institutes are growing in numbers and they can recruit more and more youngsters in their institutes. Thereafter, they have to do their training, and then with the value-added courses, the placements are provided to different companies. More and more shipping companies from all over the world are asking for a lot of more Indians. Even the Indian shipping company is today struggling to have the adequate seafarers on board. That's the reason government is now opened their doors up, concentrating on this industry. We are now also looking into producing more and more self-contained industry for ourselves and also providing for the other world. लेकिन सर, जैसे अभी बात हुई, और जो अगर हम इस की बात कर रहे हैं कि हमारी जो एक प्रतिभा है, हमारी जो टैलेंट है उसको लेके हम आगे जा रहे हैं, और जो रिटायरमेंट की जो बात हुई,
तो अभी सर कहीं ना कहीं एक समस्या और आती है जॉब की लेके, इस पे भी जरा अगर सर कुछ बताएं कि उसको हम कैसे ग्रो करेंगे उस चीज़ को लेकर के। Government has put up a DGCOM site that is going to be fully developed by August 2025. It is in operation presently. All those trainees, all those young youths who want to take jobs, they can find out what is the minimum qualification required, where to apply, how to apply, and what are the needs that are necessary to file a placement. There is a lot of unwanted material that is going around, lot of advertisements in our newspapers. These are bluffs. Unless and until it is a DG approved institute or the company, no seafarer should ever approach them. All these companies which are approved by the Director General of Shipping ensure that not a single penny is being taken under the table. There is only the cost that is involved for the training part of it. If anyone is offering you a job for a certain sum of money, please do not accept it. You can report to the unions, to the Maritime Union of India, then we will approach to the Director General of Shipping and target that agents who are actually trying to con in young youths who are looking for the brighter and brighter future. There are a lot of RPSL companies which have been suspended by Director General of Shipping. Last week the number was 96 companies they have suspended. They have found malpractices by doing their audits. And as long as these malpractices are not stopped, they cannot be in business anymore. Fresh applicants are audited. It takes a good minimum 3 to 6 months before the Director General of Shipping will give a new applicant an opportunity to start recruiting seafarers. Seafarers should also understand that they are the ones on whom the trade is looked upon. The 90% of the trade is carried by the ships. So it is the seafarer who is the main staff who is actually, or the labor who is sweating it out to carry this trade all across the world. बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल हमारे बहुत से सीफेयर हैं जो पैसे दे के फंस जाते हैं, ये तमाम दिक्कतें हैं। हमको भी चूँकि मीडिया में तो ऐसे बहुत से फ़ोन कॉल आते हैं। हम सर आपके चूँकि समय भी कीमती है, तो हम सर एक और सवाल जानना चाहते हैं कि सरकार इस दिशा में क्या काम करे, क्या काम करना चाहिए कि हम इस सेक्टर को बूस्ट कर सकें, मैरीटाइम सेक्टर को। इसके लिए सर कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे या फिर सरकार जो कर रही है उस पर क्या कहना है आपका? Government has to make sure that we have the right standardization in all the institutes. और जैसे ये मैंने कहा था कि स्पॉन्सरशिप उन्हें देखना है कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं और सही स्टूडेंट्स को इंडक्ट कर रहे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स रहती है, IMU में एग्ज़ाम्स होती है, वो एप्लीकेंट्स जैसे IIT में बैठते हैं इस तरह से IMU यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बैठ के इफ़ दे गेट सिलेक्टेड एंड देयर आर पैनल ऑफ सिलेक्टर्स there are proper seafarers, proper professors over there who will do this test for them, and then only these people will come in. Government is helping every industry, every company to ensure that the right staff is inducted in, and they are providing them all the SOPs that are required. They are also giving SOPs for the women seafarers. The company is waiving off 1 lakh rupees of the training fees out of the training fees for the women seafarers. So we are not only talking about one gender in particular, we are talking about both the genders with the shipping industry, the men and the women. And we want a gender equity to come in so that we have equal numbers of women as well as equal number of men. The government is taking all the initiatives to make sure that the empowerment of women is also carried out. And if we have the right RPSL companies who can then take or induct the newcomers, they are having certain standards. They are looking at even having audits for all these RPSLs and then rating these RPSL companies. That is also in the process of the company. So that way we will have some standardization, and definitely our government
will do much better and have more seafarers in the universe. सर शिप बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो उस पर आप क्या कहेंगे? Well, shipbuilding is the right move for our government because we are at a strategic point placed globally. If you look at it, we have 7,617 kilometers of the coastline. It is as good as calling it as an 8,000 kilometers of coastline. But today, we only have 5 major shipbuilding yards. The revenue and the economy will grow. We will have more jobs for people if our shipbuilding starts going in at a higher rate. We are having a Cochin shipyard, which is the largest shipyard today, which produces ocean-going vessels, fishing trawlers, offshore vessels, and they are able to handle a larger tonnage. The maximum tonnage today at the Cochin shipyard is 110,000 deadweight vessels we can deliver. So Adani is also now investing at Mundra port for a shipbuilding. And once we start having more and more shipyards, from 5 if we can go up to 12 or 10, I think then we will be able not only to have shipbuilding for our own Indian registered vessels but also for the foreign companies. Today, Cochin shipyard has been able to deliver autonomous vessels to the European community. It is Norway who had invested into them, and the first phase of the autonomous vessels have been delivered by the Cochin shipyard. So you can imagine how well we are now equipped. It's only thing that we all have to have faith in our own industry and we have to support them. हम सर कुछ बात करेंगे एमयूआई के बारे में। ये कैसे काम करता है, मतलब ये सबसे पुराना संगठन है, ये कैसे काम करता है और आप एज ए जनरल सेक्रेटरी आप अपने कार्यकाल को कैसे देखते हैं? MEOI is like a vast ocean. It started in the year 1939. It is the only recognized officers union in India. We like to encourage all seafarers, all the officers to take our own membership because we support the seafarers. Our prima interest is in supporting the seafarers, getting him the justice. We do the collective bargaining agreements for the seafarers so that a uniform salary is being paid to them universally. The CBAs are done with different unions in picture, and we are affiliated to the International Transport Federation. Some of the owners do direct bargaining agreements with us. The Indian registered shipping companies also have an agreement with us. So thereby, there is a standard salary which being paid to all the seafarers. There are no discrepancies in that. If any grievances they have, we look after it. It is the duty of the seafarers to report to us, and then we stand for them. We also try to make compromises with the companies to saying that you must agree to what the seafarers' needs are. Make sure that they have a better standards on board, they are relieved on time, the food, the travel is taken care as per the international standards, the training is adequately provided to them, and we care for their families. If their families have any issues, we stand up for them. We provide all the support that is required for their families in the good times and also in the rough times. So this is where the Maritime Union of India comes in. We have medical facilities for them. We reimburse certain money for their medical needs whenever they are on leave and they incur some medical expenses. We also have some convalescent homes for the families to go and have a small vacation for a nominal fee. And that nominal fee is kept in because we are an NGO. We cannot make profit. So if you look at it at what we charge is the barest minimum where you will feel that, well, this is the best place to come and spend time for their families. The children can also enjoy there, and we have some facilities for the children. Certain convalescent home have table tennis tables over there. They have badminton. They can play also the soccer over there. You know, the game soccer that is there.
So those facilities are there. There is a billiards table at some of the convalescent home. So they can always go and enjoy. They are at locations where the weather is good. It's mostly we look at hill stations for this convalescent home. So most of the part of the year you have good weather for them to go and relax. So this way, MUI always is there, stand up. We also represent, because of our good work, our ability, and since we have recognition from all over the world, the MUI is representing in IMO, International Maritime Organization, and in the ILO, which is International Labour Organization, from the Maritime Safety Committee of the ITF. आपने सर कई चीज़ें बताई उसमें कि कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल भी कई बार उठते हैं और कहीं ना कहीं आपने कुछ जवाब देने की कोशिश भी की उस बारे में, तो थोड़ा जो सवाल उठते हैं, सवाल आपको पता भी होंगे। सवाल आना बहुत अच्छी बात है। जब सवाल आते हैं तो आप भी तो जागते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ। और चिंता रहती है, वो अच्छा होता है कि जो आज पूछ रहे हैं तो हमें भी तो पता लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या उनको चाहिए, तो ये एडवांटेज रहता है। इससे हम आगे कदम डाल सकते हैं ना। हमें अगर हमसे कुछ गलती होती होगी तो हम वो करेक्ट कर दे सकते हैं, एंड इफ़ नॉट वी कैन ऑलवेज एक्सप्लेन टू देम व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग्स, एंड दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। ये सब चीज़ों से ही आपकी अच्छी चीज़ें आपसे हो जाती हैं। और कई बार होता है कि अभी हमारा एक प्लान चल रहा है, प्लान में अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है कि ई लाइब्रेरी करना। उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल आए थे कि ई लाइब्रेरी में इतना खर्चा होगा, ये होगा, वो होगा, तो ये कैसे चलेगा। ये ई लाइब्रेरी से हर एक सी फेरर को जो एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, जब भी उनको जहाज पे रहेंगे, हम किताबें उनको ई स्टेटस में फ्री ऑफ चार्ज अरेंज कर रहे हैं। इसमें खर्चा है, लेकिन हमें खर्चा हम किसके लिए करें? हम अपने सी फेरर्स के लिए कर रहे हैं। उनके लिए उनको खरीदने नहीं पड़ेंगे, उनका खर्चा नहीं करने पड़ेंगे। एग्ज़ाम को जाएंगे तभी उनको किताबें ये फ्री में रहेंगी पढ़ने के लिए, ये ऑनलाइन रहेंगी। उनको कभी भी दिल चाहे वो जाके उनका लॉगिन कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। सो ये ऐसी हम लोग सुविधा करते हैं। जिसको पूछना है तो पूछने दो। जब फूल खिलते हैं आपके बगीचे में, किसी को तो दर्द होगा ही होगा। हाँ, तो वो तो है, तो उसका चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी साथ में ले लो, चलो उनको भी लो, आ जाओ बगीचे में, आ जाओ, आप भी खुशबू ले लो ये फूलों की, एंड बी हैप्पी। दुश्मन तो कोई किसी के नहीं है, और हम तो दुश्मनी किसी से लेने वाले भी नहीं है। बिल्कुल। तो आप साहब प्रधान जी से हमारे कई सवालों का बड़े विभागी साहब ने जवाब दिया, और हम फिर किसी और अगले मेहमान से आप सबको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नागरिक। थैंक यू।